हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रैंड टेस्ट 4 के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे 61 टू 120 क्वेश्चन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी AIAPGET के होने के लिए ओनली 7 डेज बाकी है। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो में जो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक जाके आपको वो जो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है उसको ठीक से रिविजन करना पड़ेगा, उस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको चाहिए PDF चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें ग्रैंड टेस्ट 1 2 3 सबको लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which vehicle is used to convert 8x into 9x after conversion of titration into liquid potency as per HPI? तो कौन सा व्हीकल यूज होता है मेनली? इसका आंसर होगा डाइल्यूट अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेडिसिन मस्ट बी टेस्टेड ऑन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन ऑर्डर टू ascertain द चेंजेस इन द सेक्सुअल स्पेयर। दिस मेंशन इन द एफोरिज्म। कौन सा एफोरिज्म में दिया हुआ है? 127। तो जो मेडिसिन मेल्स एंड फीमेल्स में टेस्टेड होने के बाद सेक्सुअल स्पेयर में चेंजेस होता है, वो कौन सा एफोरिज्म में दिया हुआ है? 127 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of salts and gums for preparation of drug proving and even drug proving in the form of powder, freshly expressed juice mixed with little quantity of alcohol, no. By pouring boiling water on it, नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? dissolved in water just before being taken, ठीक है। तो इन केस ऑफ सॉल्ट्स एंड गम्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग प्रूविंग में सॉल्ट्स एंड गम प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? डिजॉल्व इन वाटर जस्ट बिफोर बीइंग टेकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच सेमी सॉलिड वेहिकल्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्यूरिफाइड इंटरनल फैट ऑफ एब्डोमेन ऑफ हॉग? तो इसका आंसर होगा प्रिपेयर्ड लर्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा प्रिपेयर्ड लर्ड। आपको एक बार प्रिपेयर्ड लर्ड कौन सा व्हीकल है आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, और सेमी सॉलिड व्हीकल ये टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ग्लिसरीन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? ग्रेविटी का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 1.255 टू 1.266। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ग्लिसरीन कितना? 1.255 टू 1.266। Which variety of ethyl alcohol is used for purification of sugar of milk by step process? आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? स्टेप प्रोसेस क्या है इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो कौन सा अल्कोहल यूज होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज होता है। The instrument used for collecting venom from the dorsal gland of dorsal gland में venom collecting के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इंडक्शन एपरेटस यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 68. Which of the following statement related to the collection of bark of non-resinous tree is correct? In late autumn, from young vigorous trees, early in spring, and about the development of the leaves and blossom. इसका करेक्ट आंसर होगा one only, मतलब in the late autumn. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 69. Match the list 1 and 2. Solanaceae, Alstonia scolaris, Scrophulaceae, Actia racemosa, Ranunculus, Euphrasia officinalis and Apocynaceae dulcamara। आपको करेक्ट आंसर चूज करना होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सोलानेसी का आंसर होगा डल्कामारा, स्क्रोफुलेसी का आंसर होगा यूफेशिया, रैनकुलसी का आंसर होगा एक्टिया रेसिमोसा एंड एपोसाइनेसी का आंसर होगा एल्स्टोनिया स्क्लोरारिस, मतलब ऑप्शन डी। द नोशोड diphtherium is prepared according to the directions in the N2. To which phytochemical aspirata belongs? कौन सा? इसका राइट आंसर होगा प्लांट एक्सुडेट। Which are the names given by the Samuel Hahnemann for 50 millisievert? कौन सा नेम 50 millisievert के लिए हैनीमैन दिया था? Renewed dynamization, spiritual scale not, infinitesimal scale not, new altered but perfected method and renewed dynamizations। ये दोनों नेम हैनीमैन दिया था। क्या क्या नाम? renewed dynamizations and new altered but perfected method। Cross reference for rubric parsimony in the Bonnier-Sen's characteristics repertory is कौन सा? cowardly। Bonnier-Sen's का क्रॉस रेफरेंस क्या है? parsimony का cowardly। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। This is an extreme form of malicious found in perverse and abnormal people who damage the social fabric and do great harm to the lives of other people। The rubric for above explanation is weak disposition to। इसका करेक्ट आंसर होगा weak disposition to। Experiencing a state of distress to the conscience, difficulty or feeling perplexity arising from lack of support to the thoughts, ideas or proposal of a person despite their work।
The rubric in the above explanation is embarrassed. embarrassed का क्या होगा? embarrassed में क्या होगा? Experience a state of distress for conscience, difficulty of feeling purposely arising from lack of support to the thoughts, ideas, or proposal of the person despite their work. The rubric of the above explanation is embarrassed. As if guilty of a crime, the rubric used in Kent laboratory is anxiety conscience of. ड्रीम्स इज प्रेजेंट इन व्हिच वॉल्यूम ऑफ द सिंथेटिक लेबोरेटरी? ड्रीम्स कौन सा वॉल्यूम में है सिंथेटिक लेबोरेटरी का? आपको एग्जाम के पहले सिंथेटिक लेबोरेटरी को ध्यान से देखना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। थर्ड पार्ट में ड्रीम्स है। रुब्रिक्स प्यूबर्टी एट इज फाउंड इन व्हिच चैप्टर ऑफ द बोनियसन कैरेक्टरिस्टिक्स लेबोरेटरी ऑफ बाय सीएम बोगर? कौन सा रुब्रिक प्यूबर्टी एट इज फाउंड व्हिच चैप्टर, कौन सा चैप्टर में मिलेगा? एग्रावेशंस एंड एमिलिएशन इन जनरल। एग्रावेशंस एंड एमिलिएशन इन जनरल चैप्टर में मिलेगा रुब्रिक puberty at. What is the cross reference for rubric despisers in the Kent? despisers का cross reference कौन सा होगा? contemptuous होगा despisers का cross reference। mesmerism is found in which chapter of the BTB? mesmerism BTB में कहाँ पर मिलेगा? mesmerism मिलेगा एमिलिएशन चैप्टर में। एमिलिएशन चैप्टर में mesmerism मिलेगा, आपको ये नोट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In which sections of the rubric linear nasalis is found in Kent? ये बहुत इजी एक क्वेश्चन है। linear nasalis Kent में कौन से सेक्शंस में मिलेगा? आपको फेस में मिलेगा linear nasalis। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ecstasy in BTBP can be found in, ecstasy BTBP में कहाँ पर मिलेगा? इंटेलेक्ट चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर which is most enriched with concomitants in BBCR? कौन सा चैप्टर में बहुत सारा concomitant दिया हुआ है BBCR में? जो चैप्टर होगा फीवर चैप्टर। Dr. Boniface named stasis for coccyx. Dr. Boniface named stasis for coccyx. According to the Boniface characteristics laboratory, quit means मतलब क्या है? Peculiarity of the disease. Quit means peculiarity of the disease. चलिए next question. In Learn laboratory rubric occupations, washerwoman toothache. कौन सा ड्रग होगा? The single medicines present is occupation, washerwoman toothache, phosphorus. All the following rubrics are found in chapter sensation and complaints chapter of the BTBP except sensation and complaint में कौन सा rubric है? apparent death है, कार्पोलॉजी है, नर्वस एक्साइटमेंट है, बट इमोशनल एक्साइटमेंट, नर्वस एक्साइटमेंट तो है बट इमोशनल एक्साइटमेंट आपको BTBP में सेंसेशन एंड कॉम्प्लेंट्स में नहीं मिलेगा। All the following rubrics of Kent laboratory are correctly matched with the medicine except giggling arsenic album. All the medicine following rubrics of laboratories are correctly matched with the medicine except कौन सा? giggling arsenic album, ये मैच्ड नहीं हुआ है। बट precocity, marksol, affections, stamonium, flattery, desire, palladium, ये सब कुछ करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Simodocent means if only they were। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Whom Hahnemann praised for a good translation of Organon in preface for third edition in Organon? Correct answer होगा Bruno. In which edition of the Organon the content table was introduced? Second editions. Introductions to homeopathy first appeared in the editions of the Organon, fourth editions. तो introduction of homeopathy first कहाँ पर appear हुआ था? fourth edition में appear हुआ था। चलिए next question. Original title of first edition of the Organon medicine was, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनल मेडिसिन का ओरिजिनल टाइटल किया था ऑर्गन ऑफ रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। व्हिच वन इज ट्रू इन रिलेशंस टू वेरी पर्निशियस इंटरमिटेंट फीवर? कौन सा ट्रू है? एंटीसेप्टिक मेडिसिन इज टू बी गिवन फर्स्ट। इसको ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ट्रू कौन सा है? ट्रू कौन सा होगा? ए सिंगल पर्सन इज अफेक्टेड नॉट रिसाइडिंग इन मर्सी डिस्ट्रिक्ट नाइदर ऑफ द अबव, सब कुछ ट्रू है। व्हिच वन इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द वेरी पर्निशियस इंटरमिटेंट फीवर? कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन सी। Whole of the symptoms are abrogated and annihilated in order said by Hahnemann aphorism number 17। तो आपको Hahnemann aphorism 17 में क्या दिया हुआ है देखना पड़ेगा। The inductive method in logic proceeds by inductions. Arrange the following requirements in correct order. Rational explanations, correct interpretations, exact observations and scientific constructions। Correct answer होगा B। मतलब फर्स्ट होगा आपका exact observations, ठीक है, सेकेंड होगा correct interpretations, थर्ड होगा आपका रैशनल एक्सप्लेनेशंस एंड फोर्थ होगा साइंटिफिक कंस्ट्रक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीटो टूटो जुकैंडे
were the popular therapeutic methods of scalpitis. In the year 1834, Madame Melanie de Harvely came to consult about her health with Hahnemann. She was suffering with tic douloureux. 99. These patients are mentally alert, quick, and active in their motions. Psoric patient, mentally alert, quick, and active in their motions. The terminal conditions when the patient does not react to well-selected remedies, not to intercurrent reactions, remedies given in potentized form and small doses, then resort to good drug and increase the dose to the point of reactions. What are the practical processes that are governed by principles of individualizations? Also practical processes, drug proving and study of the mathematica, examination of the patient and study of a case, selections of remedy and conduct whatever auxiliary treatment required. All the above are correct. सब कुछ correct है, ठीक है? What is homeopathy? The relations between the homeopathic remedy and the patient who has been cured. इसको बोलते हैं हम homeopathy. Which one is correct or incorrect? Indispositions are apparent diseases that are not disease. Indispositions from external causes mimic miasm. Removal or external cause of indispositions restore the patient to health, and indispositions usually aids of itself. सब कुछ correct है. Which is the following statements are true? Antipsoric remedies are those remedies which in their provings manifest most of the symptoms and latent and developed psora. True है. And frequent fault of homeopathic physician is sudden change of antipsoric remedies. Frequent fault of homeopathic physician is sudden change of antipsoric. ये भी true है. बाकी antipsoric acid is not needed in the false है, and antipsoric remedies are those remedies which in their provings manifest most of the symptoms and developed psora. False है. चलिए next question. Its greatest indication is in failure of compensations, and especially when auricular fibrillations has sets in. इसका कौन सा किस ड्रग लाइन है? डिजिटल. इसका क्रूपी कफ इन विंटर, ऑल्टरनेटिव इन साइटिका इन समर, स्टैफिसेग्रिया. Pains in limbs during wet weather getting worse from warmth of bed, better by continued walking, Beckham album. Dyspnea or asthma when the patient can only breathe by standing up, cannabis sativa. Lung disease of tall, slender, rapidly growing youth, Calcurve. Cancer liquids only but has aversion to them, Silesia. Should be thought of in ailments from chewing tobacco, alcoholism, sea bathing, sausage poisoning, dissenting wounds and anthrax poison, and stings of venomous insects, arsenic album. Hydrocephalus concomitant deadly coldness in forum of children, Arnica. Hydrocephalus concomitant deadly coldness in the forum of children, Alencaline, Arnica. Emaciations progressing every year, most marked in lower extremities, Argentum nitricum. Tell next question. Children not easily impressed when antimatter seems indicated in cough require Hebersal. As the following. कौन सा मेडिसिन के साथ इनिमिकल कौन सा होगा? फियोजोट का इनिमिकल होगा कार्बोवेज, जिंकामेट का इनिमिकल होगा नाक्सबोम, रैनकुलस का इनिमिकल होगा स्टैफिसेग्रिया, एंड फॉस्फोरस का इनिमिकल कॉस्टिकल. मैच द फॉलोइंग. कॉम्प्लीमेंट्री सोराइनम का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ट्यूबरकुलिनम, नाइट्रिक एसिड का कॉम्प्लीमेंट्री आर्सेनिक एल्बम, लैकेसिस का कॉम्प्लीमेंट्री लाइकोपोडियम, एंड स्टेनामेट का कॉम्प्लीमेंट्री पाल्सेटिला. मैच द फॉलोइंग. केमिकल एनालॉग कौन सा ड्रग का कौन सा होगा? पाल्सेटिला का केमिकल एनालॉग होगा कैलीम्यूर, डालकामारा का केमिकल एनालॉग होगा कैलिसाल्फ, इपिका का केमिकल एनालॉग होगा क्यूप्रामेट, एंड वेलेरियाना का केमिकल एनालॉग होगा प्लैटिना. Similar to the veratrum album, both the diarrhea, colic, vomiting, coldness, and craving for acids as well as antimatter. The drug may cause nausea when given in the tincture, unless given during or immediately after a meal. Crataegus oxyanthus. After operations upon the chest of hydrocephalus or empyema, a pressing sensation remains. Abrotenum. चलिए आज के लिए इतना ही. आपको AIAPGET अच्छे से देने होगा और एक ग्रांड टेस्ट हम लोग अपलोड करेंगे. चलिए, थैंक यू. प्लीज लाइक चैनल, सब्सक्राइब चैनल. और आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा. थैंक यू.